Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss research methods and research designs in detail. Okay, so in the first slide we will discuss that what is research. Research is a particular way of studying something in order to discover new information about it or understand it better. किसी चीज़ को स्टडी करने का ऐसा मेथड जिसमें हम उसके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम उसे रिसर्च कहते हैं. केयरफुल स्टडी ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट, फील्ड और प्रॉब्लम अंडरटेकन टू डिस्कवर फैक्ट्स और प्रिंसिपल. इसमें केयरफुल स्टडी होती है किसी सब्जेक्ट की, फील्ड की या फिर किसी प्रॉब्लम की. उसके बारे में हम फैक्ट्स जानते हैं या उसके बारे में हम प्रिंसिपल्स जानते हैं. सो सेकंड नंबर पे हमारे पास है व्हाट आर द रिसर्च मेथड्स. Research methods are simply a technique for collecting data or to find out the solution of the problem. Research method एक सिंपल टेक्निक है जिसकी बिना पर हम एक प्रॉब्लम का आंसर ढूंढते हैं या हम किसी चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं. So now we will discuss that what is problem. Anything which is under discussion is called problem. Simple. Now we will discuss that what are the goals of research methods. Psychologists strive to achieve 4 main goals in their research. Number 1 is to describe a phenomena. किसी phenomena को describe करने के लिए research की जाती है. To make prediction about the research, research के बारे में prediction के लिए research की जाती है. To introduce control in their research, to describe and predict behavior and mental processes through different methods of study. So next we will discuss types of research methods. There are 6 types of research methods. These are interview, case study, observation, meta-analysis, survey method, experimental methods. यानी टोटल 6 हैं हमारे रिसर्च मेथड्स. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस दीज रिसर्च मेथड्स इन डिटेल्स वन बाय वन. Number 1 is interview. Interview is the verbal conversation between 2 or more people, useful for getting the story behind a participant's experience. मीन्स के इंटरव्यू 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन होती है और ये पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस के पीछे की स्टोरी जानने के लिए किया जाता है. टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. अब हम इंटरव्यू की टाइप्स देखेंगे. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू एंड असेसमेंट इंटरव्यू. 6 टाइप्स हैं. नाउ वी विल डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन. So on the next slide we will start our types of interview. Number 1 structure. So in the next slide we will discuss types of interview. Number 1 is structured interview. All questions are prepared in advance, lacks free flow of friendly conversation, new questions cannot ask. यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू है जिसमें सारे क्वेश्चंस पहले से प्लान किए होते हैं. इसमें फ्रेंडली कन्वर्सेशन नहीं होती और नए क्वेश्चंस भी हम नहीं पूछ सकते. Number 2, we have semi structured interview. Some questions are without any format, some are prepared, फ्रेंडली एंड नॉन थ्रेटनिंग कन्वर्सेशन. सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पहले से बनाए हुए होते हैं, कुछ के बगैर किसी फॉर्मेट के होते हैं और ये फ्रेंडली और नॉन थ्रेटनिंग कन्वर्सेशन होती है. ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव आवर थर्ड टाइप ऑफ इंटरव्यू विच इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. नो क्वेश्चंस आर इन प्लान्ड फॉर्म. Questions can ask according to the situation, needs a trained interviewer, money and time consuming, provide rich source of information, gives real sense of the interview.
इस इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पहले से प्लान किया हुआ नहीं होता। क्वेश्चन हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग आस्क करते हैं। इसके लिए हमें एक ट्रेंड इंटरव्यूअर की ज़रूरत पड़ती है। मनी और टाइम कंज्यूमिंग है और ये हमें रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गिव्स रियल सेंस ऑफ इंटरव्यू, और ये हमें इंटरव्यू की रियल सेंस के बारे में आगाह करता है। ओके, ऑन नंबर 4 वी हैव डायग्नोस्टिक इंटरव्यू conducted by doctors, psychiatrists, and psychologists for the purpose of diagnosis. Okay, so on the next slide, we will discuss our 5th type of interview, which is panel interview. Formal and organized arrangement. More than one interviewers take interview. इट मिनिमाइजेस बायसनेस। ये फॉर्मल और ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट में कंडक्ट किया जाता है। एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर्स होते हैं और बायसनेस को मिनिमाइज़ करता है। मिनिमाइज़ ऐसे करता है कि एक बंदा जब आपका इंटरव्यू लेता है तो वो मे बी उसका रिज़ल्ट बायस हो जाए आपसे, लेकिन जब 2 या 3 इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो इंटरव्यू कभी भी बायस नहीं होता। Okay, so this is our last type of interview, which is called assessment interview. Similar to regular job interview, its nature is more psychological, conducted by psychologists. So now we will discuss our other types of research methods. Number 2 is case study, study of individuals in depth, provide rich source of information, lacks generalization. केस स्टडी में हम इंडिविजुअल्स को डेप्थ से स्टडी करते हैं, मींस हम उनकी पर्सनैलिटी का हर एक आस्पेक्ट देखते हैं। ये हमें रिच सोर्स फ्राहम करता है और जनरलाइजेशन को लैक करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जनरलाइजेशन है क्या। गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्मॉल पीस एंड अप्लाई इट टू द लार्ज, यानी एक छोटी चीज़ से इंफॉर्मेशन लेके लार्ज पे अप्लाई कर देना, हम इसे जनरलाइजेशन कहते हैं। Okay, so now we will discuss our third research method, which is observation. Obvious method of carrying out research. Non-experimental research. Researcher observes ongoing behavior. Adopt people's behavior consciously and unconsciously. Basically observation जो है हमारा non-experimental है और ये ऑब्वियस मेथड है रिसर्च के लिए। रिसर्चर इसमें ऑनगोइंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। ओके, सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस आवर 4th रिसर्च मेथड, विच इज़ मेटा एनालिसिस। असेसेस द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस रिसर्च, कलेक्ट डेटा फ्रॉम सिलेक्टेड स्टडीज टू डेवलप अ सिंगल कंक्लूजन। व्हेन प्रेजेंट, स्टडी कैन नॉट बी completed without the previous results. A study which is based on previous results. एक सिंगल कंक्लूजन के लिए हम डिफरेंट स्टडीज़ को सिलेक्ट करते हैं और हम उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, और हमारी जो प्रेजेंट स्टडी है वो प्रीवियस रिजल्ट्स के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। जो ये स्टडी है वो प्रीवियस रिजल्ट्स पे बेस करती है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस आवर 5th रिसर्च मेथड, विच इज़ सर्वे मेथड। Brief discussion with individuals on a topic, describing their responses, liking or disliking. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक हो, उसके ऊपर जब हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं किसी इंडिविजुअल के साथ, उसे हम कहते हैं सर्वे। इसमें हम लोगों की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स जानना चाहते हैं। Steps of survey method. Survey methods have 5 steps. Now we will see these steps one by one. Okay, on number 1 we have problem formulation. Problem formulation can be something or questions we are wondering about. On number 2 we have population and sampling. Population includes all members of a defined group that we are studying or collecting information. Sample, a part of population and all its characteristics. Number 3, instruments. Instruments that are used in survey methods may include tests and questionnaires. Number 4, results. Results appear in the form of percentage tables and graphs.
Number 5 and last step of survey method is discussion. These are the reasons behind the results. Okay, so now we will discuss our last research method, which is experimental method. This method relies on random assignment and laboratory controls to confirm the most valid, reliable result. This method has two groups. Experimental group, the group which receives some treatment. In experimental group, there may be a single subject or may several groups. Control group, the group which do not receive some treatment. Since we have discussed our research methods, now we will discuss research designs. Definition: a research design is a framework or guide used for the planning, implementation, and analysis of a study. It is a plan for answering the research questions or hypotheses. Different types of questions और hypotheses demand different types of research. जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, उसमें हमारा एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं. हर hypothesis का अपना रिसर्च डिज़ाइन होता है. Okay, so continue to the next slide. We have some types of research designs. रिसर्च डिज़ाइन की बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन एंड कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन. ओके, कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन की फर्दर टू टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कॉजल रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की फर्दर टू टाइप्स हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च. नाउ वी विल डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. Conducted for a problem that has not been clearly defined. ऐसी प्रॉब्लम के लिए कंडक्ट की जाती है जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती. Helps us to have a better understanding of the problem. हमें प्रॉब्लम को समझने में मदद करती है. Exploratory research is the initial research which forms the basis of more conclusive research. Exploratory research initial research होती है जो conclusive research की बेस बनाती है. Okay, so continue to the next slide. We will discuss conclusive research. Provide information that is useful in reaching conclusions or decision making. Quantitative in nature, that is to say in the form of numbers that can be quantified and summarized. ये हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद देती है और डिसीजन मेकिंग में मदद देती है. ये क्वांटिटेटिव होती है नेचर्स में, जिसमें हम नंबर्स यूज़ करते हैं, क्वांटिफाइड कर सकते हैं, इस रिसर्च को समराइज कर सकते हैं. इट हैज़ टू टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कॉजल रिसर्च. नाउ वी विल डिस्कस दीज टू टाइप्स. नंबर 1 is descriptive research. Describe characteristics of a population or phenomenon being studied. It does not answer questions about how, when, why the characteristics occurred. Descriptive research has two types. Number 1, cross-sectional research. Number 2, longitudinal research. So we will discuss the cross-sectional research first. It analyzes data collected from a population or a representative subset at a specific point in time. That is cross-sectional data. So next slide we have is longitudinal research. A longitudinal research is a quasi-experimental research design that involves a repeated observation of the same variables, example people, over long periods of time, often में decades. Longitudinal research जो है ये लंबी चलती है, इसलिए इसको हम longitudinal research कहते हैं. Okay, so moving to the next slide, we will discuss the second part of conclusive research, which is causal research. Also called explanatory research. It is the investigation of research into cause and effect relationship.
इस रिसर्च को हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी कहते हैं और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को इन्वेस्टिगेट करती है। Okay guys, so this brings us to the end of our presentation. See you later in next presentation. Thank you. Allah Hafiz.